Hello everyone, welcome back to another episode of the Rough Edge. My name is Asif. And I'm Yaser. ओके यासिर, एज बीइंग एंटरप्रेन्योर मुझे बहुत सुनने को मिलता है, लोगों से नसीहतें मिलती हैं कि आप अपने साथ को फाउंडर रख लो। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो काम को फाउंडर ने करने हैं मैं एक टीम रख के क्यों नहीं कर सकता। तो आप मुझे ज़रा बताएं कि मुझे एक को फाउंडर की क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। Yeah, that's a very good question. The first thing we need to understand is startups are really hard to do. So think of them as an emotional roller coaster ride. आप एक सुबह उठते हैं, आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आप कहते हैं I'm going to change the world. और उस दिन essentially कुछ खास होता नहीं है, आप वो अपना दिन गुजारते हैं, आप रात को जाके सोते हैं। अगली सुबह जब आप उठते हैं, आप कहते हैं हम लुट के बर्बाद हो गए यार, ये क्या कर रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी के साथ। So essentially उस एक दिन में हुआ कुछ नहीं, but these are the emotions you go through when you're doing a startup. So this is not a journey worth making alone. You need to have someone who can be part of that journey, who can share this basically all these feelings with you, so that it becomes easier for you to go through them. ओके, तो मुझे एक को फाउंडर ढूंढने के लिए कौन सी स्किल्स देखनी उसमें ज़रूरत है एज अ को फाउंडर। As an entrepreneur, think of yourself as that you are jack of all trades and master of one. So you're really good at one thing, but you are average at a lot of things. And that's what most of the entrepreneurs are. So you need to, and startups में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं. So you need to find someone who complements your skills, who has different skill sets. So अगर आप एक टेक्नोलॉजी में excel करते हैं, so find a business person. So that variety of skill is going to help you in long term, and वो आपकी प्रोडक्ट के लिए भी अच्छी होगी और आपके बिजनेस के लिए भी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर एक और मुझे कन्फ्यूजन है कि अगर मैं कोई ऐसा बंदा ले आता हूँ अपने बिजनेस में जिसका मेरे से डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड है, तो क्या वो मेरे स्टार्टअप में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर देगा आगे। Yeah, actually it's other way around. Difference of opinion is good. Difference of opinion is actually amazing for both for your company and for your product. Because what happens is you get to weigh in on different possibilities because your co-founder thinks differently. More of the same is bad. So don't be too scared of disagreements. Disagreements are a great way to build great companies. तो तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि उसकी प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन डिफरेंट अगर वो उसके जो माइंड सेट है वो मेरे से टोटली डिफरेंट है, तो क्या वो हमारी पूरी टीम के लिए एक मसला नहीं बन सकता। So देखो, जब आप co-founder की बात करते हैं ना, तो you are definitely talking about someone who is entrepreneurial in nature and has all those traits that an entrepreneur should have. So जैसे मैंने कहा कि difference of opinion is desirable. However, I do see where you're coming from. So देखो, find someone who differs with you on opinions but not on principles. So as I said, disagreements are fine, and you need to, as an entrepreneur, you need to learn to handle them. And when you're working with people who are really good at what they do, they will naturally be opinionated about it, and they'll have their own thoughts about things. But what's important is that they are same when it comes to principles, because people with different principles will definitely make things different for you. और इसकी एग्जाम्पल कैसी है, ये प्रिंसिपल्स जो हैं इनकी सोर्स बहुत सारी हो सकती हैं. सो दिस कुड बी ऑन रिलीजन बेस्ड, दिस कुड बी ऑन मोरालिटी बेस्ड. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. अगर आपका को फाउंडर है, दे आर एब्सोल्युटली फाइन विद कि वो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी की टॉप पे कुछ बनाना चाहते हैं, और बट यू आर नॉट बिकॉज ऑफ एनी रीजन व्हाटसोएवर, that's not a problem that's going to be solved. Difference of opinion is different. Different of principles is different. Principles naturally do not change even in long term, but opinions change on daily basis when you're more informed on things. So moving on, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो स्टार्टअप्स के लिए बहुत जरूरी है, स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए जरूरी है, कि यू नीड टू फाइंड समवन हु इज बेटर देन यू, समवन मोर एक्सपीरियंस एंड मोर. वेट यासर साहब, कन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लेकिन एक बंदा जिसका मेरे से एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, मेरे से स्किल सेट भी मेरे से ज़्यादा अच्छा है,
तो आप कह रहे हैं कि फाइंड समवन हु इज़ बेटर देन मी, तो वो अपना टाइम आके मेरे मेरे इनिशिएटिव में क्यों लगाएगा, वो मुझे क्यों ज्वाइन करेगा? इसको भी ज़रा बता दें। So, so that's a hard one in essence, and we can do a completely different video on this particular point alone. But let me try to cover this very quickly. Uh, as a founder of a startup, if there is one core skill that you need to be really good at finding people who are better than you. The only way, definite way to success, or a way that drastically increases the probability of your success, is if you surround yourself with people who are better than you. Because when that happens, you are moving towards a product that is going to be clearly superior, because there are people who have much more refined thoughts and experience than you. और अब ये हम घबरा जाते हैं सुन के कि ये कैसे होगा. So one of the key ways, if I describe it very quickly, is that this is going to only happen if you have spent enough time, effort on creating a thought process कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. और that is the only process that will give you enough convincing power to excite people who are better than you to come join your startup. और इसके साथ साथ देखो, also try and find people who share the passion for what you're building. हमने पहले भी बात की थी, startups are like an emotional roller coaster ride. So find those people who are passionate about what you're building, and that will help you get through this journey. So this video was primarily about why do we need a co-founder and what should we look for when we are trying to find one. And perhaps we'll do another video that where we will talk more about co-founder कैसे ढूंढा जाता है and what are the ways to go about it as well. So thank you so much for watching. हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी. हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए. और हमें ये भी ज़रूर बताइए कि हम अपनी अगली वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करें.